जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा जी। हाँ जी, हम ज़ैनब चीमा से उस वक़्त पूछ रहे थे। क्या ऑस्मोटिक क्या प्रॉब्लम होती है? हुँ? ज़ैनब आर यू देयर? यस मैम। जी बताइए, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्या होता है डायबिटिक पेशेंट में? हुँ? नॉट श्योर एग्जाम, नॉट श्योर मैम, नॉट? आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर। चलो आयशा वक़ार आप बताओ। कुछ होता है, कुछ याद आया आपको? हाँ, दानिश शाबाश आप बताइए। मैम एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है। वाटर लॉस होता है और वो किस टाइम पे होता है और वाटर गेन किस टाइम पे होता है? ये तो हमने 3rd ईयर में पढ़ा था ना कि यस मैम। during the day they keep on drinking more water or during the night they keep on going through a lot of hyperuremia होता है उनको because of maturation, increased maturation की वजह से eventually what is the end कि मॉर्निंग में उनके टिश्यूज श्रंकन होते हैं और रात के वक्त उनके टिश्यूज जो होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के वो स्वॉलन होते हैं, राइट? तो अब इसमें क्या होगा कि जब एक टाइम टिश्यू श्रंकन है, दूसरे टाइम पे स्वॉलन है, तो अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग इम्प्रेशन ले लेंगी तो आपका डेंचर कैसा बनेगा श्रंकन टिश्यूज के साथ? सर मैम स्मॉल बनेगा एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल साइज होगा। उससे स्मॉल बनेगा जिसकी वजह से वो उसको बहुत टाइट फिटिंग हो जाएगा रात तक, ठीक है? यस मैम। और जब रात को आपने ज्यादा अगर आप स्वॉलन टिश्यूज का इम्प्रेशन ले लिया तो डेंचर विल बी लिटिल लूजर, so that is why we also prefer midday impressions and midday appointments. ठीक होगी बात? यस मैम। ठीक है, and we normally because the tissues are very fragile and we want to avoid any ulceration during impression taking or any other because of any other procedures, so you have to put minimum pressure during impression making as well and use a traumatic technique, okay, because we don't want to injure the tissue so that there is no problem of later on poor wound healing or any god forbid any sort of infections. So isliye we have to be very very careful during handling of tissues of a diabetic patients. And then what are the few principles that we would like to incorporate just to reduce the load per unit area? आप लोग समझते हो load per unit area क्या होता है कि because if in a small place you put a certain amount of say 1 Newton of a load in 1 square centimeter 1 centimeter square area, when you want to increase, बेटा I'm taking a lecture, ठीक है, उसके बाद लेक्चर के बाद, ठीक है, so you want to distribute that 1 Newton of load, so it will be better that you distribute it to a larger area so that load per unit area is reduced. That is why whenever you are making a complete denture you need to include the maximum denture bearing area as much as possible. You would like to include it, right? So in order to reduce the load per unit area, and when you are making a partial denture you would like to utilize a maximum number of rests on the rest seats. ये जो आपको मेटल के प्रोजेक्शन दांतों के occlusal surface पे नजर आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? Rests कहते हैं, right? And they are seated on their rest seats. So you have included or involved or incorporated the occlusal surfaces of the teeth because you want to distribute the load onto the occlusal surfaces as well. So load, the maximum number of teeth involved हो जाएंगे तो load per unit area reduce हो जाएगा. ठीक होगी बात? Similarly, we move on forwards that when you want to take a jaw relation, अभी जो बैच हमारे पास आया है फाइनल ईयर का प्रोस्थो में, they have been introduced to the jaw relation. बाकी शायद लोगों को नहीं पता. फिलहाल आप लोगों को जो initial introduction है jaw relation का वो ये है कि it is the relationship of the maxilla with the mandible and how apart or how close they should be together. Right, so you have to take the adequate occlusal vertical dimension and according to the adequate rest vertical dimension. Rest vertical dimension क्या होता है कि when the patient or like right now
you are having the rest vertical dimension. You are listening to me and you are not clenching the teeth together, right? So this is the rest vertical dimension. And then when you deliberately, if even if right now you would bring the teeth together, अभी आप करके देखो, तो जब teeth आपस में मिलेंगे, तो teeth एक दूसरे के साथ मिलेंगे, and the separation of the maxilla with the mandible will slightly reduce because the teeth are not joined together. So there is a small difference between the rest vertical dimension and the occlusal vertical dimension. और rest vertical dimension में आपकी जो space होती है दांतों के दरमियान, वो space present होती है, और OVD में वो space नहीं होती. ठीक है, तो ये आप you have to take the adequate occlusal vertical dimension, because edentulous patients में you would not know, you would be clueless, and then you would take guidance from the remaining natural structures. ये लंबी बात हो जाती है, तो हम आपको इलादा से पढ़ाएंगे कि how to take jaw relation, how to manage it. बट फिलहाल आपने याद रखना है कि एडिक्वेट occlusal vertical dimension होना चाहिए. ये बात सबको समझ आई है कि नहीं आई? रोहा, आप बताइए. रोहा, कि एडिक्वेट वर्टिकल डायमेंशन में क्या, वर्टिकल डायमेंशन क्या होता है? आवाज आ रही है? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर रोहा को क्यों नहीं आ रही? बेटा फिर ये हो सकता है कि आई विल ट्राई टू राइट डाउन योर रोल नंबर्स. इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, तो जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे बुलाने पे, एक आयशा है, एक रोहा है, फिर हम इनसे बाद में मिल लेते हैं, जस्ट टू नो व्हाट दे वर डूइंग इन द क्लास. ठीक है, चलें आगे चल के देखते हैं. अच्छा जी. Then we move on to the further modification during denture denture construction. अच्छा इसमें excuse me. अच्छा जी, इसमें हमने क्या कर रहा है, we are looking at the ways and techniques just to reduce the load on the remaining tissues. अभी शुरू में देखो मैंने आपको बताया कि impression making में atraumatic tissue handling होनी चाहिए. आपने बहुत ज़्यादा टिश्यूज को कंप्रेस नहीं करना, मिनिमम प्रेशर देना है. इम्प्रेशन मेकिंग में हमने ये मॉडिफिकेशन कर दी. ठीक है, फिर हम ओक्लूजल हम उस पे आ गए कि हमने सपोर्ट कहाँ कहाँ से लेनी है. सपोर्ट जो लेनी है वो रिमेनिंग टेंशन एरिया जितना ज़्यादा हम मैक्सिमम इन्वॉल्व कर सकते थे, हमने वो इन्वॉल्व किया either in the complete denture, or we have tried to incorporate teeth as well in the partial denture, right, just to gain support. Then occlusal vertical dimension में हमने क्या कहा, हमने ये इंश्योर किया कि we are managing or we are trying to take the adequate occlusal vertical records, right, so that we are not placing any undue stress or undue trauma onto the remaining tissues. अब remaining tissues में क्या क्या है, bone is remaining and the mucosa is remaining. Then when we come to the occlusal table, तो occlusal table पे आपने क्या करना है, you also have to reduce load. अब हम reduce load कैसे करते हैं, we go we try to narrow down this the width of the occlusal table, because when the width of the occlusal table is reduced, so less force will be transmitted to the underlying bone. So that is why we say that we have tried to minimize the amount of the load onto the underlying bone. Similarly, in order to distribute the load evenly, we opt for or we aim for this balanced occlusion. Balanced occlusion क्या है? What is balanced occlusion हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मेजॉरिटी अभी इस वक्त समझने की बात ये है कि when a tooth is contacting at one point in the anterior area, most likely there should be at least one point of contact on each side, on the right side as well as on the left side. So 3-point contact minimum hona chahiye in 3 different dimension. Then we say that we are able to achieve a balanced occlusion. Why do we want to achieve it? We want to achieve it कि हम अगले दांत जब मिला रहे हो तो पिछले दांतों में भी कांटेक्ट होना चाहिए, so that the denture is not displaced and it does not move excessively, and because of that prevention of movement, there is no extra force which will come and fall onto the remaining bone or the remaining tissues. Okay, so that is why we prefer, we are trying to distribute the load, but we prefer balanced occlusion in artificial dentition, but we do not prefer it in natural dentition.
ठीक है, तो हम इसकी बाद में डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ इस वक्त मैं आपको, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्टरी इनिशियल लेक्चर, इंट्रोडक्टरी तो नहीं है, इनिशियल है, तो अभी आप डेंचर फैब्रिकेशन से गुजरे नहीं हो, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। सो इसीलिए मैंने तस्वीरें साथ साथ लगाई हैं कि हमने अक्लूजल टेबल प्रोड्यूस करना है, न्यूट्रल जोन में रखना है दांतों को। न्यूट्रल जोन क्या होता है वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे कि दैट इज अ प्लेस इन द oral cavity in which all the forces coming from one direction are neutralized by the forces coming in the other direction. हम आगे जाके बात करेंगे कि what is neutral zone as well. So denture fabrication में this is how we also manage these loads, right? अब इसमें किसी को confusion हो तो मुझे बता दें। हुदा आप बताइए, हुदा नफीस। यस मैम, समझ आ गया। आगे ठीक है, यस मैम। चले आगे चलते हैं। अच्छा, डेंचर केयर, डेंचर एंड ओरल केयर इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप डेंचर की इंसर्शन करें तो पेशेंट को ऐसे फारिग नहीं करते ना, उसको बताना है कि व्हाट आर द क्लींजिंग मेथड्स, हाउ टू मेंटेन योर डेंचर, हाउ टू मेंटेन द रिमेनिंग टिश्यूज। आप टिश्यूज की क्लींजिंग कैसे करनी है रेगुलरली, आपने उसको पानी में रखना है, खुला नहीं छोड़ना। जब यूज करना है यू हैव टू रेगुलरली मसाज द योर म्यूकोजा और द गम्स, वहाँ पे जो है गम्स तो नहीं है, म्यूकोजा ही होता है, ओरल म्यूकोजा, उसको रेगुलरली आपने सॉफ्टवेयर से मसाज करना है। डेंचर को आपने रेगुलरली क्लीन करना है, सो दैट देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रॉमा और इन्फेक्शन in a diabetic patient. And you also have to give him regular follow-up appointments so that whenever he is using the denture, you should be on guard that there is no traumatic event that is happening which goes unnoticed, and then it leads on to a bigger problem, right? So you have to frequently give regular follow-up appointments, say after 3 months, just to you should ask them to come and visit, and you can have a look at his remaining his dentures and his remaining tissues, right? Then we move on to the hypertension. डायबिटीज में अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन हो कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की थी, आप लोगों को पता होना चाहिए डायबिटीज में कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज देम। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग डेंचर कंस्ट्रक्शन आपने इम्प्रेशन पे आपने सपोर्ट कैसे गेन करनी है, इम्प्रेशन पे हाउ टू मैनेज और हाउ टू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इम्प्रेशन मेकिंग, फिर आपने सपोर्ट कहाँ से लेनी है, जॉ रिलेशन क्या लेना है आपने, और उसके बाद आपने उसकी आफ्टर केयर किस तरह से करनी है, राइट? एंड इंफ्यूजन कैसे देनी है, आफ्टर केयर कैसे करनी है। देन वी मूव ऑन टू द हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन बाय itself it does not cause xerostomia, but the medications that are used for hypertension, and which are we all are familiar with those medications, and we know that people have to live for their lives for these antihypertensive medicines. So the medications, the effects that are caused by these medications onto the oral tissues, they do affect the denture work, right? Or the denture functioning into the oral cavity. So what are those effects of the oral manifestations of the antihypertensive medications? These are the manifestations that I've given in this bar graph. And we can come across gingival bleeding, we can come across hypersalivation, lichen planus, facial paralysis, gingival enlargement, and periodontitis. आपने ये आप लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन फार्माकोलॉजी में जब आप पढ़ रहे थे, you have already been introduced to these side effects of the antihypertensive medication. अब इसमें हमें कौन सा इफेक्ट करता है? Gingival bleeding. It affects us a huge number of patients in which gingival bleeding हो रही है, especially if you are giving them a partial denture, so you have to be very very careful. और ये वही बात है कि you have to note it down during history that the patient is hypertensive. तो फिर आप अगला सवाल आपका होना चाहिए हिस्ट्री में कि what are the medications that you take for to maintain your or to counter your hypertension. जब आपको उसका पता होगा तो फिर आपके जहन में वो इफेक्ट्स आ जाने चाहिए which can possibly involve the oral tissues, right? Then just have a look at this. ये मुझे बहुत अच्छी सी एक टेबल मिल गया था, तो मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूंगी. If you can take screenshot of this as well, sorry. जिसमें उन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की कैटेगरीज बताएंगी और हर एक इंडिविजुअल इफेक्ट्स बताएंगे, राइट? So if you can take screenshot of this table as well, that alpha adrenergic blockers, they cause xerostomia. Central alpha adrenergic blockers, they cause xerostomia, dry mouth, taste changes, bloated pain. Vasodilators क्या करते हैं? Facial flushing. अब इसमें risk of gingival bleeding यहाँ पे ज़्यादा है, infection. अब फिर adrenergic inhibitors, dry mouth, beta adrenergic blockers, dry mouth.
लीशनॉइड रिएक्शंस, ये लीशनॉइड रिएक्शन में आगे जाके आपको दिखाती हूँ. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिंजाइवल हाइपोप्लेजिया, वेल दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिंजाइवल हाइपोप्लेजिया, ये भी आगे जाके आपको तस्वीर दिखाती हूँ उसकी. डायूरेटिक्स अगेन ड्राई माउथ, and then we have renin angiotensin system inhibitors, उसमें भी dry mouth and angioedema, right? So अब इसमें देखो इस टेबल के accordingly, and this is a table given on this site, and American जो dental association उसकी साइट पे टेबल दिया हुआ है, in which we are able to see that dry mouth बहुत सी medication से हो रहा है, and few of the medications are causing leishmanic reaction और gingival hyperplasia और gingival bleeding. So ये 3-4 effects आपके जहन में हमेशा होने चाहिए. So because if you know कि ये मेडिकेशन ले रहे हैं और आप फेस में प्रेजेंटेशन नजर आती है, तो you can ask the patient to go to his physician and ask him to change his medication, right? So this is a gingival hyperplasia. आपको इस तरह की टिपिकल पिक्चर उसकी नजर आती है, and you can discuss it out with the patient कि मुझे चीज नजर आ रही है, आपकी हिस्ट्री में है, and please go to your physician so that he can give you an alternate medicine. इसी तरह जो leishmanic reaction है, it presents in the form of these white striations, and you have to discriminate it from lichen planus. ठीक है, lichen planus में पेन होगी और उसकी हिस्ट्री बताएंगे. leishmanic reaction में बिकॉज ऑफ द ड्रग इंड्यूस्ड होगा, वो आपको ड्रग की हिस्ट्री के साथ रेलिवेंट होगा, right? So you have to discuss this thing with the patient. And again, these are different types of the drugs which can interfere with the antihypertensive medications. इसमें आपको पता होना चाहिए कि non-steroidal anti-inflammatory agents, aspirin, जो उनके effects को जो है वो affect कर रही हैं. इसकी इतनी इम्पोर्टेंस शायद आपके लिए बीइंग अ प्रोस्टेरोटिस्ट इतनी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप प्रोटीन में ड्रग्स वाई एंड एनाल्जेसिक्स के कोई और इतनी प्रिस्क्राइब करते भी नहीं हो. बट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कौन सी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो कौन सा ओरल मैनिफेस्टेशन कर रही है, राइट? अच्छा जी. Then we move on to the oral lichen planus. What happens in oral lichen planus? इसमें आपको पता है histological picture में we have the sawtooth appearance of these ridges, reti ridges, and you can actually see the same infiltration of these cells over here, in which lymphocytic infiltration है, जिसमें because of this presentation यहाँ पे autoimmune reaction होता है, and the oral lichen planus is presents into the intraoral cavity. So this is a table that we have in for the hypertensive patients, जिसमें आपने उसको मैनेज किस तरह करना है. xerostomia है, so what are the interventions or what are the management things that you can do for this particular for such patients? You can ask them to have frequent sips of water. अब वो यहाँ पे mention नहीं हुआ, वो सबसे important है, ठीक है? Frequent sips of water, this is the easiest way to do, because artificial saliva, many patients will not be able to buy the artificial saliva. तो आपने उसको कहना है कि हाथ में पानी की बोतल रखें और frequent sips लेते हैं. Then yes, if you think the artificial saliva is there, you can ask them. Then if the denture is not very retentive, you can ask them to go for the denture adhesives. You need to remove any sharp edges. You always have to advise them to maintain good oral hygiene. Why? Because good oral hygiene अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस मजीद बढ़ते चले जाएंगे, राइट? Then leishmanic reactions, which are lichen planus like, you can again, if you see them, you can ask them to go for the antagonistic drugs or use alternate drugs, which are antagonistic drugs are, जैसे भी मैंने आपको बताया कि वो NSAIDs हैं. Then if you come across gingival bleeding or hyperplasia, tell them to use alternate drugs. If you think that they're anxious, you should how it will be visible, they would have reduced pain threshold. Then in consultation with their physician, you would ask them to take 5 to 10 milligram diazepam a night before the dental appointment. Postural hypertension आप कैसे avoid करते हैं? If the patient is lying down, you will always ask them to get up very carefully. First come in an upright position, then gradually when they are stable, then ask them to stand up, right? And always they should be standing with the support so that they don't fall down abruptly. Then if there is a possibility of facial nerve paralysis, then you have to refer them to their physician as well as a neurosurgeon so that they can easily take the appropriate advice, right, to change the medication. So, then oral lichen planus की जैसे मैंने भी बात की, how does आपको पता है, you have gone through it in oral pathology as well, किसकी 4 types होती हैं. अगर आप ये suspect कर रहे हैं तो पहला तो ये होगा कि don't start with the denture construction, immediately get themselves treated first for the oral lichen planus to control this condition, because आपको पता है इसमें जो erosive lesions होंगे उनकी presence में you just cannot even
take impressions as well. तो इसको कंट्रोल करना सबसे पहले ज़रूरी होगा, बाद में वी आर एबल टू इंटरवीन। जब एक दफ़ा कंडीशन कंट्रोल हो सकती है तो इन सारी कंडीशंस में यू हैव टू फॉलो द एट्रोमेटिक टेक्निक जो मैंने आपको शुरू में भी बताई है डायबिटिक पेशेंट्स की, वो इन सब में फॉलो करनी है कि इम्प्रेशन मेकिंग में मिनिमम प्रेशर डालना है, कोई इरिटेटिंग सरफेस आपने टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं लानी, आपने जॉ रिलेशन कैसे लेना है, आपने सपोर्ट कैसे लेनी है, आपने एक्लूजन कैसे मेंटेन करनी है, और बाद में आफ्टर केयर क्या है। वो तकरीबन सब में वो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली। Then management of oral lichen planus में obviously we have to remove any irritating factor. Irritating factor जो भी वहाँ पे ulceration अगर कोई cause कर रहा है, locally कोई irritating factor है, that can be in the form of scaling and root planning, ill-fitting restorations हैं, sharp edges of teeth हैं if you are going for a partially dentate individuals. And then systemic therapy of dexamethasone, you will not be prescribing any systemic therapy, physician will be prescribing the systemic therapy. और लोकल थेरेपी में डेक्सामेथासोन, माउथ रिंसेस एंड ट्राइसिनोलोन और फ्लोरिनेटेड एजेंट्स, and you can also ask them to refer to their physician for any immunosuppressive agents such as cyclosporine, azathioprine and levamisole. एंड डेली ओरली आपने कौन सी ऑइंटमेंट देती हैं? ये आपने बड़ी मशहूर ऑइंटमेंट है कैनालॉग ओरा बेस. What is actually in there? It is 0.1% of tacrolimus ointment, which is given twice daily for one month. It is really effective. जिससे आपका lichen planus के जो lesions है वो completely remove हो जाते हैं. Preferably a metal denture base in comparison to an acrylic denture base, because metal denture base का आपको अगर याद वैसे नहीं याद, आपने थर्ड ईयर में तो नहीं पढ़ी partial dentures, metal denture base में जो infection है उसकी growth कम होती है, right? It is more hygienic, right? So that is why it is advisable to prescribe this metal denture base to these patients, and the atraumatic denture technique जिसकी मैं भी बात करी थी वो आपने इन patients में use करनी है. ठीक है जी. Then we move ahead to the Parkinson disease. अभी तक कोई confusion lichen planus पे या hypertensive patients पे? उजाला आप बताइए. उजाला अंजुम. आप देना. Yes, ma'am. जी बेटा, अभी कोई confusion तो नहीं है आपको hypertensive patients के या lichen planus के? नहीं मैम, अभी क्लियर है. चलो. अच्छा जी, then we move on to the Parkinson disease. आज बस ये लास्ट डिजीज है, उसके बाद हम आगे बाकी डिजीज हम इंशाल्लाह मंडे वाले लेक्चर में करेंगे. पार्किंसनिज्म क्या है? इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, पहले ये बात समझने की है कि इट इज अ disease of the nervous system which is characterized by the cardinal features of rigidity, bradykinesia, tremor and postural instability. अब ये आगे जाके मैं आपको एक पिक्चर देखती हूँ जो मुझे बड़ी मुनासिब लगती है to remember as well आप लोगों के लिए. अच्छा, what happens in Parkinson's disease? इसमें क्या होता है कि dopamine levels in which they are affected because of in Parkinson's disease, the amount of the dopamine which is produced is reduced, right? And that is why we or the patient experiences the movement disorders. ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो dopamine होगी जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर कर रही है उसका लेवल वहाँ पे रिड्यूस हो गया है. बिकॉज ऑफ दैट जब इम्पल्स ही कम जाएगी तो मूवमेंट डिसऑर्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. एंड हाउ डज इट प्रेजेंट इटसेल्फ? इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ लाइक दिस कि हम ग्रेजुअली एक एक इस पिक्चर को अगर आप याद रखें तो उससे फायदा ये होगा कि आपके जहन में इसके सिम्टम्स हमेशा रहेंगे कि ऑनसेट यूजुअली ग्रेजुअल है एंड आफ्टर एज 50 और स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है. ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. कैसे इंक्रीज होती है कि मास्क लाइक ब्लैंक एक्सप्रेशन आ जाता है पेशेंट के फेस पे. ठीक है, ही इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव और वेरी एक्सप्रेसिव. एंड स्टूप्ड पोस्चर है, थोड़ा सा आगे की तरफ पोस्चर है. एंड पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं. ये शायद यू आर फैमिलियर विद दिस थिंग. Tremor commonly in hands and arms, pill rolling motion with the fingers occurs most often at rest, may involve diaphragm, tongue, lips and jaws. Increases with stress. Then shuffling and propulsive gait होती है. ठीक है, थोड़े से जैसे झटके लगते हैं, शफल शफल इस तरह करके. Then muscle rigidity है, increased resistance to passive movements, cogwheel, jerky, slow movements. Rarely occur in black population. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed black population कि उनमें ये Parkinsonism की disease नहीं है.
पॉसिबल डिप्रेशन है, पॉसिबल मेंटल डिटोरिएशन है, ब्रेडिकाइनेसिया, लॉस ऑफ नॉर्मल आर्म स्विंग वाइल वॉकिंग। जैसे आप चलते हैं ना, तो आर्म्स मूव करते हैं, इस तरह मूव नहीं करेंगे। reduced blinking of the eyelids, loss of ability to swallow, blank expressions, difficulty in initiating movements. तो ये 4-5 चीजें भी अगर आप जहन में रख लेते हो, तो you will be able to identify if a patient with Parkinson's disease he walks into your surgery. Sometimes, since patients are mentally disoriented, they might not be able to give you the right history. So you should be able to identify any one of these signs. If you are able to do so, what will be the benefit? It will be benefit for you as well कि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, और you can easily ask the patient to refer to a physician, या आप notes में लिख देंगे, तो you will be prepared to deal with any emergency situation, right? So Parkinson disease की problems क्या होती हैं? Potential problems. Poor oral hygiene है. Solution क्या है? Since if they might have some problem with manual dexterity, so you can easily ask them to utilize specialized electric brushes, denture cleaning tablets, nighttime denture removal, right? And poor retention and control of the dentures, because अभी हमने कहा कि tremors होते हैं और jaw movements में और टांग में भी होते हैं. So the jaw movement exercises to be practiced. The vertical height of the occlusion is adjusted for जैसे मैंने आपने फिलहाल ये जहन में रखना है कि adequate occlusal vertical dimension लेना है. न्यूट्रोजोन में आपने डेंचर लेना है ताकि रेजिस्टेंस काम आए, डेंचर बनाना है. शैलो कस्प occlusion, बैलेंस occlusion आप यूज कर सकते हैं. एंड हाई इम्पैक्ट रिजन एंड सॉफ्ट लाइनर. हाई इम्पैक्ट क्यों? स्ट्रॉन्ग डेंचर बने ताकि अगर कहीं एक्स्ट्रा फोर्स पड़े या वो गिर जाए उनसे तो वो इतनी जल्दी टूटे, राइट? एंड अगेन xerostomia है, थिक रोपी saliva होता है, तो frequent sips of water, artificial saliva और denture adhesive. Depression, cognitive problems, apathy jeopardize the successful fabrication and utilization of complete dentures. So you would, if you identify such patients, you would also always refer them to medical consultation and the actual treatment. So this is it for today. From here onwards, we are going to continue with the rest of the conditions that I had mentioned initially in the lecture. Any questions from any one of you? I would really like all of you to be very interactive during the class. आप लोगों का जो mind है वो inquisitive होना चाहिए, ठीक है? शानज़े, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शानज़े, are you listening to me? शानज़े ग़ज़नफ़र. रोल नंबर 60. चलिए जी, ठीक है जी क्लास. एनी क्वेश्चंस? नो मैम. चलें ठीक है. Ma'am. चलें ठीक है. चलें जी, we will finish our lecture at this point and then inshallah we'll meet again on Monday. ठीक? Thank you Okay, class. Allah Hafiz.